बहुत क्लियर है। क्या है? क्या है? बेशरम जो तू चुप कर, समझा? जो तू चुप कर। नहीं चलती। अभी इसकी ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? भाई ये मुश्किल है, मेरे पास समझ लो। देखो क्या ये B7 से स्पॉन्सर्ड है क्या? और कोई चैन नहीं होती है, मेरे पास चैन रहता है। क्या है ये? अच्छा। नंगे को अच्छो। बहुत ज्यादा सिमिलर इसकी YouTube पे फीड होती है क्या? UDAYS तेरे चाचा वीडियो बनाते हैं होती है नहीं भी होती है ठीक है सेम वीडियो आती है तो बहुत सारे होती है वो YouTube पे क्यों नहीं होती कुछ क्यों अरे भाई होती बचना मत दिखाओ ना क्या दिखाऊं मैं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं क्यों क्यों करेगा आई थिंक एकदम से बाल आ गया क्या क्या नहीं करने हो गए मुझे तो उधर जाके सुनाने वाला था मेरे को ये लोग क्या मेरा नहीं है मुझे उसका ऐसे करेगा क्या तुम्हें कॉपी कर इतना भी तरफ इतनी बेशर्मी है अबे बाला के रख मजेला बाल ये मनसुख अबे क्या बाल है तेरे बाल इतने काले और घने नहीं भाई नहीं तो मतलब इधर तो चिपकली लो वाला क्या होगा वो तो बाल क्या होगा वही तो होता है आली बाल I wrote. What would be? भाई क्या? हाँ
अरे भाई क्या है तेरे को मुझे मजा आता है ना करने में अब वो नहीं आती ना कब कब करते क्या मजा आता है चिड़चिड़े जाने में ले ले वो भी हाँ जाते मनस ऐसे भी करने में मजा आता है यार हम अभी है तो क्या हुआ तो मजा आता है क्या क्या अभी क्या दिखा रहा है एक लड़की थी दूसरी और लड़का समझ नहीं आया नहीं दिख रहा है वापस इसको प्रैक्टिस करो तो दूसरा लड़की दिख रहा है मैं तो तेरे जवाब बन गया आगे पवन तेरा काम देना हुआ मैंने डाल नहीं रही और कौन से दिया नहीं खुद के नहीं तो इसको इसका अकाउंट लगा अरे एक सेकंड सर देख डालो मैं क्या करूंगा कोई भाव नहीं समझता जाने दे बाद मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था शायद से फिर वो चेक क्या डीएक्टिवेट क्या डीएक्टिवेट अकाउंट डीएक्टिवेट बोल नहीं है नहीं दिख रहा है भाई तू वीडियोस या कमेंट्स पढ़ने के लिए देख रहा है तेरे अकाउंट में पोस्ट ये देख और क्या है तो आ जाएंगे 3 मिनट आता है तो तुम्हारा अरे मैं अपना अकाउंट देख लेती मैंने डीएक्टिवेट किया था शायद से तो फिर मैं देख लेती कि तेरा अकाउंट से वो इंस्टाग्राम में देखा क्या दूसरा यार टीवी में यार अबे यार ऐसे जुल्फी ऐसी कर रही है मुझे मेरे बालों में लग रहा है कि मेरे चेहरे पे लग रहा है ऐसे चेहरे बस ना लड़कियों का दिखा लड़कियों के लिए नहीं है लड़कियों की बोलते हैं देख रहे बंद देख अरे भाई अबे आगे बेसिक तुमने और दो और आओ मुझे छोड़ने लगेगा आगे जा और आगे जा तू पीछे चले जाना मैं पीछे कितना सो भाई गाइस करो कॉमन सेंस ओ देखा मैंने रिफ्रेश क्या सब सुन पड़ेगा अरे थे यार मैं देखा था 2-3 थे ए निशान तो लड़का है ये है नहीं है देखना कहाँ पे मुझे ये देखा उधर पे है ना हाँ किधर है
अगली हो गई है 2 मिनट की बात ये है भाई 2 मिनट का काम बंदी बन गई चलो एक मिनट 2 मिनट का नीचे बता दी है टाइम पास टाइम पास वो पता ये लोग से पूछे बोलता नहीं वो इसका फायदा नहीं क्या बोल इसलिए बोलता काय करत नाही तू काय बोलतोय काय बोलतो काय नाही करत काय करत नाही अरे अब बस नोटा करून तो चुप बस थोडं केला क्या देख रहा है चलो नाचते हुए देख रहा है चलो दे दो फोन सबके कौन है नहीं गए मैं भी नहीं लाए कौन तो फोन बात हम अंदर लोगों को बोले तो कोई सुनेगा नहीं ना मतलब बहुत बोला देखो लेके हम दो देखो ठेवायला ऐकतो का ठीक है अरे बोल दे ओके सबका मोबाइल सबमिट नहीं करते क्या अभी नहीं क्यों क्या हुआ मोबाइल अलाउड नहीं है साथ में रखना आज तक ये क्या ठीक है अभी नेक्स्ट क्लास से करो सर क्यों तुम्हें क्लास नहीं अटेंड करना है मोबाइल पे बात इतना प्यारा है क्या मोबाइल ऐसा एडिक्शन है 10 पे तो अलाउ नहीं करते साथ में ये कौन धक्का दे रहा है इसको करो जाता है ऐसे ही सरो ऐसे ही ओके सो वी डिस्कस्ड स्पीड अभी हमको डिस्कस करना है वेलोसिटी ठीक है फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर ऐसी डिस्प्लेसमेंट अपॉन सर ऐसी हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा कौन सा होगा ब्लू हाँ बड़ा वाला ब्लू सर दोनों भी सर पंखा बंद कर तो पीछे तुम लोग सर पंखा बंद कर अब पीछे सर अपनी नोटिफिकेशन सर कर दो हाँ सर कर दो लास्ट वाला 5 मिनट हो जाएगा ठीक है नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वेलोसिटी में क्या आ गया डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो बस जैसे स्पीड था वैसे ही यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रियल लाइफ में कौन सा वेलोसिटी है व्हाट इज द वेलोसिटी नेचर इन रियल लाइफ नॉन यूनिफॉर्म it is very rare that you will cover the I mean the rate at which the displacement is covered is same it's not possible because traffic patterns are different in different regions now this is not visible and likewise you have average velocity what is average velocity average velocity is defined as focus displacement upon total time displacement upon
Total time. upon total time. I'll make the whole class stand up. If you are having difficulty sitting, pay attention. So average velocity is displacement upon total time interval, right? So it is net displacement or total displacement, or just displacement is also total displacement, because displacement is between final and initial and final position. Okay, so that's it. Likewise, you have instantaneous velocity. What is instantaneous velocity? What did I tell you? Velocity at a small fraction of time. Some unit time. So it is instantaneous velocity is equal to displacement in a very short time interval divided by that short time. Okay, displacement in a very small time interval divided by. So when will be instantaneous velocity and instantaneous speed same? Sir, first I just wanted to know that what is the difference between velocity and speed? You tell me. See the definition of speed and velocity. Okay. What is speed? What was speed? What was speed? Speed was Distance upon time. Distance upon t. so what is the difference between distance and displacement? Is the difference between speed and velocity? Do you take into consideration direction here? Do you take into consideration direction of motion here? No. Whereas here, it is distance taking place in a given direction. That is what is velocity. Is that clear? We saw a big diagram explaining what is displacement and distance. Yes. Okay. So velocity will be displacement upon time. Straight line or a distance upon time. That is velocity. Is that clear? Hmm. And since most motion in real life are non-uniform, so you will have to deal with average velocity. So symbolically, how do you write? V is equal to S upon T. This is the formula for velocity. Okay. Now, what is instantaneous velocity? It is the distance covered in a given direction in a very small time interval divided by small time. Same thing. So I'm not repeating it for velocity. Same thing, just you have to add direction in a given direction. In a given time. Is that clear? Okay. So for what kind of motion, the velocity and speed will be same. Think about it. The displacement and the distance is the same. Yes. And the unit time is also the same. So when the motion is in the same direction, okay, when the direction does not change, let us say a motion is taking place. When a motion is taking place in a straight line without change of direction. Then distance and displacement will be same. Correct? So when motion is in the same direction, is along straight line,
then distance is same. So if distance and displacement is same, then speed and velocity also will be same. Everything will be same. Got it? That's why we are studying motion in a one dimension. When it is without change of direction, by attendance. Okay, so then this becomes very simple. A straight line motion without change of direction becomes very simple to study. Then you don't have to deal with different approaches. Is that clear? So now let us discuss examples. Examples of non-uniform motion. These are examples of non-uniform motion. Speed of walking. Speed of Speed and distance of walking. walking, मतलब vehicle के terms में motion of a car in a traffic has to be non-uniform. Correct? Mostly that. Or motion of a ball on a rough surface. Rough surface में क्या होगा? Motion of ball after throwing. हाँ, ये throw any ball थोड़ी देर के बाद में क्या होगा? Rough surface पे तो उसका speed कम होते रहेगा, तो रुक जाएगा. So smooth surface पे भी वही हो. नहीं. थोड़ा Smooth. टाइम ज्यादा लगेगा बट वो वही हो. तो smooth surface जब हम बोल रहे हैं मतलब उस पे friction zero है. Yes. That surface is smooth for us. Ideal situation. लेकिन ऐसा होता नहीं है. Real life में क्या होता है? कोई भी surface पे zero friction होगा ही नहीं. That is why while walking we get tired, right? If the surface is smooth, we just give a jerk and we'll keep slipping. Effort लगाने की जरूरत ही नहीं है. Slip ही होते रहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता. ठीक है? So real life situation is very different from ideal situation. तो पढ़ते टाइम to simplify our learning, right? We study about ideal situation. Once we have learned, then we compare it with real life situation to make our complete learning. Is that clear? Okay. So do you have any questions related to distance and displacement, speed and velocity, and what is average speed and average velocity? Huh? Do you have any question related to average speed and average velocity? Tell me what is average speed? It is the addition. It's the addition of all the speed divided by the total time. That's not average speed. Total time. Total distance upon total time. The formula is नहीं हुआ. So distance को add करके total distance ही होगा. गलत आएगा आंसर. ठीक है? क्योंकि you cannot add speed and divide it by 2. Average of speed is not average speed. People say it is like अलग-अलग speed से चल रहा था V1, V2, V3. So mean ले लिया उसका V1 divided by V2 और V1 plus V2 divided by 2. ऐसा नहीं है. You have to take total distance upon total time of the entire journey. Is that clear? And what is average velocity? Total displacement upon total time. हाँ, so displacement upon total time. Total लगाना है दोनों ही. ठीक है? You have to break the journey in multiple parts, then calculate the net displacement and total time interval. Is that clear? All right. Next is so there is a table given in your book, right? So that differentiates between distance and displacement, right? You also have a book table which differentiate between speed and velocity. Just go through it. Then it will be here. Volume में भी देख लो. Volume में it is on Page number
Page number 15 and page number 18. On page 15 in your volume, you have difference between distance and displacement. The traverse. Traverse. Covered, traversed, traveled. Traversed, traveled, covered is the same thing. Okay. So read page 15. Let's read this table. Page 15, distance versus displacement. And on page 18, speed versus velocity. First, we'll discuss distance versus displacement table. So each point is clear. So first point is basically definition only. Okay? Then it is mentioned that one is distance is scalar quantity, displacement is vector quantity. So distance depends on the path followed. Depending upon the path or route, distance between the two locations could be different. Okay, so it depends on the path followed. What about displacement? It doesn't, because there is just one path which can be shortest. Okay, it can be more than or equal to the magnitude of displacement. So distance will always be greater than displacement or equal, but it will never be less. Can distance be less than displacement? No. It can at best be equal, but never less. Whereas the same is not true for displacement. Displacement can be Less or more. less. Or equal. Displacement has to be less or equal. It can be negative. Okay? It can be negative, positive as well as zero. So there are three possibilities for displacement. When is displacement zero? Tell me. When is displacement zero? When is displacement zero? When the final and initial positions are same. Like A से start करके वापस A पे आ गए. So this can happen in a straight line motion or also in a circular motion, right? जहाँ से start किया वापस उधर आ गया. What is displacement? Zero. Correct? So initial final position same after the journey. That means displacement is zero. So second last point, it may not be zero even if displacement is zero. Correct? All right. Go to velocity now. Velocity table on page 18 of your volume. This page 18. Any issue in the first line? Distance traveled by a moving object in 1 second is called its speed. 1 second means unit time. Either you say unit time. What is unit time? 1 second. Okay. So, and what about velocity? Distance traveled by a moving object in 1 second in a particular direction or in a given direction. It's called velocity. Again, second point is speed is a scalar quantity, whereas velocity is
vector quantity. Are you reading? Second point, speed is a scalar quantity, whereas velocity is vector quantity. So scalar means what? It does not tell us the direction of motion. Speed से हमको direction of motion नहीं पता चलेगा. Whereas velocity will tell us the direction of motion. ठीक है? So for a straight line motion, what are the two possible directions? Front, back, up, down. Very good. Okay, or plus minus. Okay. So speed is always positive because scalar quantity is always positive. It doesn't have any direction. Whereas velocity can be positive or negative depending on the direction of motion. Can velocity be zero? Yes. Eh? Can it be zero? When? When the object is at rest. Okay? When the object is at rest. Okay. Just like distance and displacement, speed in one round in a circular path. For speed in one round in a circular path, average speed is not zero. Okay? Because it is total distance upon time. Whereas in a circular path, after one round, what is the average velocity? What is the average velocity? तुम बताओ. In a circular path, after one round, what is the average velocity? Zero. Why? Because the area covered half and the area when we determine back is subtracted. Did we ever use the Displacement is word? zero. Did we ever use the word area? When? In defining speed, velocity, displacement, distance, did we cover area? It is a one-line motion. One line में area कहाँ से आ गया? Area is a two-dimensional concept. Length और breadth होना चाहिए, दो dimension होना चाहिए area होने के. Circle में, when the object reaches the start position, then what is the displacement? Zero. And what is velocity? Displacement upon time. Zero by anything is zero. Okay, so start catching the meaning of the definitions. That will help you solve numericals. Okay. So are we good till here? Okay. Now I'll start a new concept, acceleration and retardation. Right. Acceleration and retardation. Is represented as A. And this is also a vector quantity. So acceleration tells us the rate at which velocity is changing. Acceleration is this, the rate of change of velocity. Okay. So that is A is equal to B minus U by D, where U is initial velocity, B is final velocity, and what is T? Is the time in which velocity changes from U to V.
due to इनिशियल से फाइनल बनने में जितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम टी। ओके, सो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या बनेगा अभी? व्हाट इज न्यूमरेटर? वेलोसिटी, व्हिच इज मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड। डिनोमिनेटर का यूनिट क्या है? सेकंड। कितना आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या यूनिट था? मीटर पर सेकंड। इसका क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया एक्सीलरेशन। अब ये वेक्टर है, लेकिन वी आर नाउ नॉट राइटिंग वेक्टर, है ना। 9th 10th में अगर वेक्टर नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, नाउ दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? रिटार्डेशन। देखो, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन क्या है? दिस इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन। Okay. See, for example, in this case, let us say initial velocity was 5 meter per second. Okay, and we, after some time, the velocity reaches 10 meter per second. So final velocity is greater than initial velocity. Then we say acceleration. ठीक है? So like if you are pedaling a bicycle, and you start pedaling it vigorously, ठीक है? So then velocity will increase. That is called acceleration, when the velocity is increasing. But now you're going at some velocity, and you now apply brakes. Then what happens? It is called retardation. So this is now negative acceleration. Okay? So braking is the example of during braking. क्या होता है? U तुम्हारा 10 है समझो, फाइनली V कितना आ गया? 0। 10 से 0 आ गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, so this is called retardation. Whenever velocity, the final velocity is less than the initial velocity, what happens to the acceleration? Retardation. ठीक है, ऐसे yeah. ठीक है, so what is V minus U? Change in velocity upon time. V minus U is change in velocity. In hours time, time t. That's what is measure of acceleration. Huh? You can use other formula. Say that again. On the acceleration. Like, what is the other formula? SAT. That is not other formula. It is same formula. Rearranged. Formula is different. No, but that is, you know, there is something called as equation of motion. Equations of motion. So there are 3 equations of motion. V is equal to U plus AT, S equal to UT plus half AT square, V square minus U square equal to 2AS. ठीक है? There are 3 equations of motion.
So this comes from here only. So basically, these are equations that describe any motion. So it is a relation between final velocity, initial velocity, acceleration and time. So this is called A. So we have to find A, so the formula changes. by definition, this is what is A. It is the rate at which your velocity is changing. But then when you rearrange it, you will get AT is equal to V minus U or V equal to U plus AT. Okay. So we are going to derive this graphically. We will derive it. By graph. We'll derive it by graph. Okay, but little later. First, let us complete acceleration. So just like speed and velocity, you have uniform and non-uniform acceleration. So when the acceleration will be uniform? When the velocity will change at constant rate. When V and U Matlab each second, let us say velocity increases by 5 meter per second. Okay, 2 seconds में हो जाएगा 10 meter per second. ठीक है ना? मतलब 2 सेकंड में वेलोसिटी कहाँ पहुंच जाएगा 10, 3 सेकंड में कितना पहुंच जाएगा 15, 4 सेकंड में कितना पहुंच जाएगा 20, यानी हर सेकंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है 5 5 5 5. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है. सो वी विल कम टू इट लिटिल लेटर. नाउ यू हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. In this case, velocity changes at a constant rate. what's Uniform. Velocity changes at constant rate. ठीक है. Otherwise it is else it will be non-uniform. ठीक है. So real life situation is always non-uniform acceleration, but we have to study about which motion? Uniform acceleration. Uniform acceleration. Okay, so all the equations of motion that I have written, it is only valid for uniform acceleration. So what is the example of uniform acceleration? Is object under free form. Okay, when the object is falling, every moment its velocity is rising. So here it is 0, but when it hits the ground, it hits at a maximum velocity. ठीक है, velocity बढ़ते ही जाता है. क्यों? Because उस पे acceleration लगता है. देखो, G लगता है ना. This is the acceleration due to gravity. ये G force है. Acceleration due to gravity. This is called G force है. acceleration due to gravity. Last class also you mentioned about G force, right?
There is no G force given in your book anywhere. क्या होता है इसमें? Let me check. All my 12 students have done well. So we have सर 10th का भी रिजल्ट आ गया 10th नहीं 12th का होगा. सर 10th का भी आया 10th का भी आया है. हाँ 10th सीरीज 10 बजे आ गया 3 बजे आ गया So G force is your weight, क्या gravitational force of a planet. planet Earth is not a planet. sir but what is It tells you the amount of acceleration caused by the gravity of the planet. planet This is what causes things to go extremely. So actually, what we are calling acceleration due to gravity, okay? What we are calling acceleration due to gravity is G force as per the definition given on the net. But no one in your book it is mentioned as G force. So you don't. नहीं सर G force अलग है मैं आपको बस पूछ रहा था क्योंकि मुझे डाउट है वो G force हम भी अभी सिखाएंगे थर्ड चैप्टर में. G force अलग नहीं है. Gm upon R square. But we don't call it G force in your book. That's what I'm telling you. नेवी पे जो जेट चलते हैं ना उसमें G force पढ़ना है तो G force क्या होता है बस उसका पूछ रहा हूँ अभी तो इस पे खड़ा है. हाँ ठीक है. तेरा वेट है. हाँ वो कहाँ से आया? ग्रेविटी हाँ. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जी फोर्स होता है. उसी को जी फोर्स बोलते हैं. जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल. समझ आया? तो ग्रेविटेशनल किसकी वजह से आता है? सिर्फ अर्थ को होता है क्या? हर प्लेनेट को होता है. और वो उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है. फिर तुम मून पे जाएगा तो यू विल नॉट फील योर वेट लाइक यूर फीलिंग ऑन अर्थ. कम ग्रेविटी हाँ, इसलिए वही जी फोर्स है. हर प्लेनेट का अलग अलग जी फोर्स हो जाएगा. You understood? But don't use the term G force. तुम्हारे बुक में कहीं पे भी G force नहीं mentioned. क्या mentioned है? Acceleration due to gravity. समझ आ गया? Okay. So what did I tell you? So uniform acceleration. Now this acceleration is constant. कोई भी object हो, heavy or small, ठीक है? If I drop this duster and pen, the duster and this pen, they will reach the ground at the same time. So heavier should reach earlier, right? yes the diagrams Right? yes Did you get two sound or one? No? same time Yes. क्यों? Because G acting is same for both objects. sir So listen. Both initial velocity was 0. Now their velocity is increasing at a constant rate because G is same. Understood? That's what it is. So both heavy and light object will reach at the same time. समझ आया? So many a times you might understand one thing, but practically when you do the verification, it is totally different. So it is independent of mass. We are going to do that formally. Till here, is it okay? yes sir All right.
Okay. Now one more thing, and after that we will go to represent motion graphically. Have you written this down? Yes. All of you have written it? Yes. Online students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'll erase it. Now I'm going to ask you a question. Yes, sir. Direction of motion given by sign of acceleration or velocity. Fill in the answer. Right. Positive A. Negative A. Are the is positive and negative sign of A giving you the direction of motion? No. Yes, yes, yes. Yes, yes. Okay, like let's say you're saying negative A gives opposite direction, Yes. right? Let's say you're bicycling, okay? Now you apply brake, then suddenly cycle's direction reverses. Does it suffer retardation? Yes. No, no. Yes. When you apply brake, Ah. negative acceleration acts. Yes. What happens to cycle's direction? It starts going reverse. No. What did I ask? Velocity कम होती है और कुछ नहीं. कुछ नहीं होता ना, क्वेश्चन क्या है? Direction of motion. Does this tell you change of direction? Plus A से minus A हुआ तो change of direction हुआ क्या? Velocity और velocity. Such positive और यही समझना है, ठीक है? तो ज्यादा खींची करोगे तो नहीं समझ आएगा. You have to pay attention. अब देखो, plus A में क्या हो रहा है? It shows velocity increases. क्या होता है इसमें? Increases. कहाँ पे? In the direction of motion. वो कुछ भी हो सकता है. इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं. In the direction of motion. ठीक है? Positive acceleration means velocity increases in direction of motion. What about negative acceleration? increase very small. But does it tell you that direction changes? No. So velocity decreases in the direction of motion. So acceleration sign gives you no knowledge about direction of motion. Therefore, sign of acceleration does not tell about direction. Okay? So what tells you direction of motion? Velocity. Okay? So plus V means positive side, left to right. Minus V means right to left. You have only motion in one dimension, or upward and downward. Is that clear? So, whereas sign of velocity gives direction of motion.
tells about plus sign means forward or upward direction. Okay, negative sign means backward or downward motion. Negative sign. So this is we are talking about velocity. Negative sign means backward and downward motion. It is not and or. Okay, or backward or downward. So both these concepts are clear now. And what you are doing? I'm writing. I'm just watching. It's No, not I'm just writing. Okay, so the direction is told only by the sign of velocity. Can we see one demonstration video on this? Of what? This chapter. It will Where is be. the acceleration? It is better understood theoretically. Right now, first get your concepts here. Okay. Now we'll study motion graphically. Okay. Okay, acceleration due to gravity, I told you now. What is acceleration due to gravity? Simple is G. Is the acceleration capillary in the freely falling body.
कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल होता है ना अर्थ की ग्रेविटी में, जो उसका एक्सेलरेशन है, दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and its value is constant है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, it is the example of uniform acceleration, that's right. Check in your book how much we have covered so far. Classically, what is Graphically it's what word है? देखने में बड़ा लगा, बहुत सारे पेज है। हाँ, तीन टाइप के ग्राफ है, 10 पेज। तीन टाइप के ग्राफ है। अभी तक जो हमने मोशन सीखा है, व्हाट हैव वी लर्न, मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, वी हैव ओनली लर्न डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब मोशन। क्या क्या टर्म्स है, पोजीशन, एक्सेलरेशन, मोशन, अरे वो लास्ट में आ रही है, लेट्स गो हायरार्की, पोजीशन, मोशन, देन डिस्टेंस, मोशन तो एक प्रोसेस है, टर्म्स, हाँ, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। हाँ, वो भी एक एक्सेलरेशन ही है, वो कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जनरल टर्म क्या है, ए प्लस ए और माइनस ए, ठीक है, समझ गए, 4 या 5 चीज सीखी, क्या सीखा है, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, और इन सब में क्या कॉमन है, टाइम, इन सब का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सीखा, क्योंकि टाइम इज द ओनली थिंग व्हिच इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और ग्रोइंग। टाइम कभी नेगेटिव होता है नहीं, टाइम एक ही डायरेक्शन में है, व्हिच इज इंक्रीजिंग। द सेम थिंग नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इट बिकम्स वेरी इजी टू एनालाइज एनी मोशन। ग्राफ देख के समझ जाता है कि ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ से हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड इट आल्सो गिव्स अस अ विजुअल सेंस। इमेजिनेशन में क्या होता है, देयर इज अ स्कोप टू डू एरर, बट ग्राफिकली यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। सो लेट अस नाउ लर्न ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब क्या, मोशन अलोंग ए लाइन और मोशन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या हुआ, मोशन इन वन डायरेक्शन। So graphical representation of a we'll first complete the full theory of the chapter, then we'll do numericals in the end, ठीक है। तो सबसे पहला है distance, displacement, distance or displacement versus time, ठीक है। पहले ग्राफ में we will analyze distance, change of distance or displacement with time, ठीक है। So the first thing will represent on y-axis, this will represent on x-axis, ठीक है। तो देखो
So our time is here. Time in second is along x-axis and displacement. Displacement is measured in meter. So in the bracket we are writing the unit. Okay, and it is increasing along y-axis. So let us say we have represented 1, 2, 3, 4, 5 seconds, and this displacement covered is each second it is covering say 5 meters. Okay, so what kind of graph will get? Okay, so we're getting a straight line. So when you get a straight line, displacement time graph, what is the nature of motion? Uniform. Uniform. Each second, how much it is traveling? Say from 1 to 2, 5. 5. So it is adding 5 meters. Okay. So from the graph, what information you get? Nature of motion. Okay. So graph information. From ST graph. What information you get from ST graph? Displacement is also S. And time is T. Huh? So ST graph. So first, it tells you about nature of motion. So if the motion is uniform, it will give straight line. For uniform motion. What if the motion is not uniform? Then what the graph would look like? It could be curved like this, or it could go straight. Then again, different. Okay. So different kind of curve for a non-uniform. So in the same graph, let us say I draw like this. What is happening? In the first second, it covered just about 1 meter. Meters. The next 1 second, it covered more than 1 meter. Now from 2 to 3, you see how much it covered? So much. 7. So much it covered, right? So here the distances covered are different. Okay. What if it was like this? Say like this. So we are seeing 3 graphs here. So this is 1 for uniform motion, 2 is non-uniform. What about 3? What is happening in third case? Let us say these are 3 bodies. First body is The showing velocity is starting from velocity. This is displacement time. So what about this red line? What kind of motion it tells you? Huh? no motion. No motion. Very good. Is the position changing? No. 15 meter में ही है ना? Time is changing. First second will be 59, second will be 59, आगे भी 15 ही होगा. Okay, if this is straight like this. So it is object at rest. तो समझ में आ गया? The nature of motion. So पहला वाला, I'm just writing the number now.
One is straight line motion. Two is non-uniform motion. Three is object at rest. At rest. Okay. So from ST graph, okay, we can figure out what is the nature of motion. Second, so this is the first information. Second, slope of ST graph gives velocity. Slope of ST graph gives velocity. Correct? Now, how to obtain slope? देखो. You just require 2 points. है You require 2 points. Let's say this is my. Let's say this is my first graph. This is my second graph. The second graph है blue curve and third वाला ये. ठीक है. Slope के लिए क्या चाहिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए. So let us say I take this point and this point. So corresponding time point क्या है ये. ठीक है. So what is change in y-axis? 10 minus 5. Change in y-axis is 10 minus 5. And change in x-axis is 2 minus 1. What is slope? Slope is 10 minus 5 divided by 2 minus 1. Slope ऐसे निकालते हैं ना. Last chapter में I told you how to calculate slope. Yes, sir. याद है ना? Slope is change in y-axis divided by change in x-axis. तो y-axis क्या है? Displacement. X-axis क्या है? Time. 5 meters. What is displacement upon time? Velocity. Displacement upon time क्या होता है? Velocity. Correct? So 5 by 1. That is 5 meter per second. Understood? अभी तुम्हारे बुक में अलग ग्राफ दिया है. I have mixed all the graphs in one only. लेकिन मैं स्लोप किसके लिए निकाल रहा हूँ? फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? देखो इसका स्लोप कांस्टेंट है. Is the slope going to change if I select these 2 points? करके देखो. 15 minus 5 कितना हो गया? 10 divided by 3 minus 1 10 by 2 वो भी 5 ही आएगा. So slope remains same for the straight line. Correct? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप कांस्टेंट है क्या? Is the slope constant in non-uniform motion? No, sir. No, it is constantly increasing. Sir, so whether object is at rest, the motion is uniform. No, there is no motion. It is ST graph. For velocity time graph, then this will tell you that the object is in uniform motion because velocity is fixed. Here position is fixed, no? What is S? S is representing here displacement. Like from here to here displacement is 5. From here to here displacement is 10. But for displacement to come into existence, object has to move now. Position has to change. Position is not changing. Is that clear? Actually, you should call it. देखो, if the motion is taking place on the horizontal, this is x actually. So x2 minus x1. S क्या होगा यहाँ पे? ये x2 है ना? और ये क्या हो जाएगा?
This is x2 and this is x2. Are you getting confused with different lines? Red color, blue color. Should I keep just one line? Okay, for comparison, this is better. Three different objects are there. 1, 2, and 3. सबका अलग-अलग motion है. ठीक है? So either you can represent this with the help of three different graphs, or in the same graph I am comparing. So what is the slope for object 3? 0. Slope 0, and slope gives velocity. Slope of ST graph gives velocity. So जिस ग्राफ का slope 0 है, मतलब उसकी velocity 0 है at rest. Got it? Understood? और इसका slope constant है because it is straight line. So its slope is constant throughout. कहीं पे भी जाओ उसका velocity constant है. मतलब ये क्या है? Uniform motion. Uniform motion में velocity change नहीं होता. Curve में क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे velocity is changing at a very slow rate. Okay? Displacement is changing at a slow rate. But as you go up, now in small time interval, look at 3 to 4. See the change in displacement. Time has changed only 1 second, but from here to here, the displacement has changed very big. So here the rate of change of displacement is greater. Whereas here the rate of change of displacement is less. So this is indicating increasing velocity. Clear? So this is your displacement time graph. So you can write this, and then we will cover velocity time graph. Okay? Just take this down. This is important. What information we get from ST graph? Nature of motion and slope. Okay. Gosh, very good. ये कोई चश्मा भूल गई है. अपने से पहले कौन था? ये क्लास में कहाँ पे था ये फर्स्ट में. ये से आया कौन सा क्लास में? हाँ देखो. Any questions here? Now I will give you some graphs and I'll ask you questions on that. So to find the velocity, you just have to select any 2 points. इसका भी velocity निकालना है. So you can select these 2 points. उसका corresponding y-axis पे लेके you can divide it by 10. ठीक है? तो कर्व के केस में you will get average velocity. ठीक है? हमेशा क्या निकलता है इससे? Average velocity. Let me know once you are done writing. We'll discuss. There are some 6, 7 cases. So x2 minus x1 is actually displacement. So s is equal to x2 minus x1.
This is final position minus initial position. Position is indicated by x. Now look here, we are right now representing the position on y-axis and the time on x-axis. So for vertical motion, this will be y. For horizontal motion, this will be x. But where we are using x on the y-axis, that's okay. You can define what x is representing here. What is displacement? Final position minus. This extra point to whether. Yes, final position minus initial position. Is that clear? Yes. Okay, let us come to page number 20. See the graph, case 1. So what does it indicate? Graph for a stationary object at rest. Case 3. Case 1, page 20. Okay? It is object at rest. This one. Other case. यहाँ पे case 3 है. That's okay. No, forget that graph now. Now this is the exercise. Okay. What about case 2? Uniform. Uniform. Okay, it's a uniform motion with constant velocity. Okay, uniform velocity means constant velocity. Straight line का slope change होगा क्या? Slope change नहीं होगा. Slope क्या होता है? Velocity. Slope is velocity. तो straight line का slope is constant. मतलब क्या constant है? Velocity is constant. Velocity is constant मतलब velocity is uniform. Uniform means constant. ठीक है? ये समझ आ गया? तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म. वेलोसिटी कैसा है? वो भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है. ठीक है. केस 3 में क्या हो रहा है? फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड. Non-uniform. Uniform from 0 to 6. 0 to 6 is also uniform. 6 to 12 is also uniform. Yes. But what is happening? Overall motion is Non-uniform. non-uniform. क्यों? Why over? ऊपर नीचे नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है. वेलोसिटी स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा. आगे पीछे कैसे जा रहे हैं? पोजीशन देख, यहाँ से दूर जा रहा है 20 मीटर और फिर यहाँ से क्या हो रहा है? 20 से 0 पे आ रहा है. मतलब ये वाला मोशन फॉरवर्ड है. सर तो वेलोसिटी 0 हो गया. वेलोसिटी 0 हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है. समझ आया? यस. क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ. समझा ना? एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर मोशन इज 0. अंडरस्टूड? अब देखो ये वाला मोशन में देखो 2, 3, 6, 8, 10, 2, 4. ठीक है. ये कितना हो गया? ऐसे. ठीक है. तो 12 पे ठीक है. ये वाले मोशन में क्या होगा? Non-uniform. 0 velocity. तो अभी यहाँ But इधर दी 0 velocity. Velocity plus 10 और minus 10 होगा. ये समझो है तुम्हारा 10, 20, 30, 40, 50. ये क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. पोजीशन ऐसे चेंज नहीं, ये क्या है? पोजीशन. हाँ. तो अभी क्या हो गया? ये देखो, एक पॉइंट ये ले लो और एक ये पॉइंट ले लो. ये 2 पॉइंट यूज करके स्लोप निकालो. यहाँ पे स्लोप कितना आया? तो 0 to AB.
A to B मोशन के लिए वेलोसिटी कितना है, स्लोप कितना है? A to B motion के लिए 10 Velocity for A to B is how much? 10 meters per second minus 1. So 50 ले लो चलो. So this is 50 minus 20. 50 minus 20 upon 6 minus ये कितना है? ये मान लो 3 है ना, बीच में आ रहा है. 6 minus 3. 6 minus 3 कितना होगा? 3. 30 by 3. 10 meter per second. ठीक है. अभी तुम B to C निकालो, कितना होगा? B to C is equal to minus 10 meters per second. अभी यहाँ पे देखो, ये T1 है, ये T2 है, और ये क्या हो रहा है? T3. समझ आए? तो ये क्या होगा? V1 क्या है तुम्हारा इस केस में? 50. अपना 50 इधर है. फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ? 20. ये 6 कितना है? minus 9. फाइनल कितना है? 9. फाइनल 9 minus 6. और ये कितना हो गया? 3 minus 30 by 3. कितना आया? 10. ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो डायरेक्शन क्या है? अवे. ये नेगेटिव वेलोसिटी है, तो डायरेक्शन क्या है? बैकवर्ड. फॉरवर्ड है, दूसरा क्या है? बैकवर्ड. तो साइन ऑफ वेलोसिटी गिव्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. Yes sir. समझ आ गया? तब तो टोटल 0 का भी तो साइन होगा. अभी तो B और C से ले रहे हैं. नेट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 0. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? A to C. 10 plus minus 10 upon 2. A to C. What is the final time? 12 seconds. Initial time 0. This is initial. What is the final velocity? 0. Minus 0. क्या हुआ? 0 by 12. कितना आया? 0. समझ आ गया? So average velocity is 0. Slope ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं. Yes. ठीक, समझ आ गया? तो ये हो गई कहानी तुम्हारे ग्राफ्स की. तो नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स बैकवर्ड मोशन. दिस वाज फॉरवर्ड मोशन, पॉजिटिव. ठीक है. अब अगर तुम्हें और एक ग्राफ देता हूं, ठीक है, यह what kind of motion is this? एस टी दिया तो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं, या फिर एक्स टी, एस या एक्स दोनों में से कोई भी एक चीज दिया होगा. व्हाट इज द मोशन फ्रॉम ए टू बी? व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दैट? यूनिफॉर्म. जहां पे भी स्ट्रेट लाइन है, मोशन क्या है? यूनिफॉर्म. बी टू सी, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. सी टू डी, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. डी टू ई, अगेन यूनिफॉर्म मोशन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक हो गया. तो सारे केसेस मिक्स भी कर सकते हैं. ये मिक्स हो गया. उसमें कहीं पे कर्व भी आ सकता है ना? ये वाला जो है, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो. कर्व हो गया. ठीक है. तो क्या हो रहा है इस केस में? From B to C, initially it started traveling very fast. और धीरे धीरे उसका क्या हो गया? स्लोप 0 हो गया. स्लोप यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे स्लोप क्या हो गया? कम हो गया. है ना? C पे आके वो रुक ही गया. C पे क्या हो गया? पैरेलल. है ना? स्लोप किसको बोलते हैं? एंगल दैट इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस. तो एंगल, ठीक है. आगे चल के तुमको और एक चीज आएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा. ये अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा. ठीक है, वो पढ़ोगे तुम बाद में. अभी जरूरत नहीं. अभी खाली चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस देखो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड tan थीटा. ठीक है, बाद में देखो.
So displacement time graph is clear. Yes. Yes. अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आपके पास कितना टाइम है? 10 मिनट है. बस हो जाएगा. हटा दो इसको. Yes. जैसे तुमने ये देखा है वैसे ही आगे 4, 5, 6 कर्व वाले हैं. ठीक है, वो सब सिमिलर पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा. Let's look at velocity time graph. तीन ग्राफ देख लेते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसा है. वहां पे जो मैंने एक ही ग्राफ में बनाया था उसको मैंने अलग अलग बनाया. ठीक है, तो अब मुझे बताओ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम. इंफॉर्मेशन क्या देता है डीटी ग्राफ? Straight line of. So information from DT graph. First, nature of motion. Straight line of. ये क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है इसमें? Constant. अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है. Yes. वेलोसिटी कांस्टेंट है. Yes. t बदला 1 2 3 4 पे वेलोसिटी कितना है? सर बढ़ रहा है. Constantly बढ़ रहा है. हाँ, तो वेलोसिटी का क्या क्या सीन है? Constantly बढ़ रहा है. हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंटली बढ़ रहा है. इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. अभी इसका स्लोप क्या देगा तुमको? dt ग्राफ का स्लोप क्या देगा? ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. ये क्या है? v2 माइनस v1. और ये क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1. तो ये वाला ग्राफ क्या है? हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यहाँ पे स्लोप क्या है तुम्हारा? स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन. दूसरा क्या मिलता है तुमको? स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन. ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है. क्यों? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है. स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो स्लोप एक ही है. दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, no motion. Very good. When there is no motion, when the velocity is zero. Velocity zero है क्या यहाँ पे? Velocity zero है क्या? कितनी velocity? Zero. Zero velocity. Zero velocity. Yes. 20. 20. तो कांस्टेंट है. ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है कि नहीं? इधर मोशन हो रहा है. ये क्या है? वो ऑब्जेक्ट है. वेलोसिटी जीरो है क्या? व्हाट इज y एक्सिस? वेलोसिटी. यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है कि 20 मीटर पर सेकंड है? 20 per second. So you got to be careful. What information is represented by the vertical axis? It is now velocity. It's not displacement.
So displacement constant means, मतलब position constant means object at rest. This is not at rest. Graph is looking similar, but it is conveying different information. It is velocity time graph, not displacement time graph. Yes, can be close. Close. Yeah, close. Oh, easy. Okay. Now tell me this. So what about this graph acceleration? What is acceleration here? What is slope here? There is no slope. It is flat. Yes. For slope, the graph has to have some angle or inclination. There is no inclination. So acceleration is zero. That is a equal to 0. But v is equal to constant. Therefore, uniform motion. Therefore, uniform motion. So characteristics of uniform motion is v must be constant. So this is not object at rest. समझ आया? Yes, sir. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे velocity बढ़ रही है. Non-uniform. Is it uniform acceleration? No, sir. Slope is continuously changing. Yes. So this is non-uniform acceleration. Yes. This is uniform acceleration. This is non-uniform acceleration. Okay. So third, there is one more thing that VT graph gives you. Area under VT graph is displacement. What is the third information? Area under VT graph is displacement of the body. ठीक है? Area under VT graph is, देखो, Sir, third point is not visible. third point is not visible. Okay. Is it visible? Yes, sir. नहीं अब तो clear नहीं. Now it's visible. Visible now? Yes, sir. So area under VT graph gives displacement of the body. देखो, what is area? Let's say consider this graph, second one. Sir, area. What is area? Length into breadth. Yes. तो अभी देखो, यहाँ पे area क्या है? Let us say I take this area. So what is this? This will give me time. This is now a rectangle, right? This is time and this is velocity. So what is v into time? Huh? What is area? Area is equal to v into t. Yes, sir. V into t. What is v into t? Area. Displacement. Okay. What is v into t? Displacement. Therefore, displacement. Area under VT ग्राफ. ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट V is equal to S by T होता है ना, तो S equal to V into T हो गया. वो कैसे मिल रहा है हमको? एरिया से मिल रहा है. So ग्राफ से तुम बहुत सारे, by looking at the graph you can tell the nature of the motion, you can calculate slope, which in different graph give you different information. Okay, चलो rest will cover in the next. Wait, Lydia. तुम यहाँ घर जाने के लिए आते हो क्या? मतलब तो फिर ओके
Now, oh, yeah. Take it. Huh?